Good morning students, welcome to our YouTube channel लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेस एंड लक्ष्य मैथमेटिक्स एप्लीकेशन। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को पढ़ा, चलो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में क्या है देखते हैं। एसी और डीसी करंट किसको कहते हैं? डीसी करंट समझते हैं, है ना। If the current move in only one direction, जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करता रहता है, वैसे करंट को क्या कहते हैं? डीसी करंट कहते हैं, है ना। द करंट, इफ द करंट मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो करंट क्या होता रहता है, मूव करते रहता है, इसको हम लोग कैसा करंट कहते हैं? डीसी करंट कहते हैं। जैसे करंट फ्लो इन सेल, बैटरी में जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डीसी करंट होता है, ठीक है। एसी अल्टरनेट करंट, ठीक है। इफ द करंट चेंज their direction, if the current change their direction, called alternate current। अगर करंट क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है ना, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पे, क्या कहलाएगा? अल्टरनेट करंट कहलाएगा, एसी कहलाएगा, ठीक है। क्या बोले? अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का तो वो क्या कहलाएगा? एसी करंट कहलाएगा। और हम का बता चुके हैं डीसी कैसे बनता है और एसी कैसे बनता है। अगर कॉइल को एक ही डायरेक्शन में मूव किया जाए, वायर को एक ही डायरेक्शन में मूव किया जाए तो करंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? डायरेक्ट बनेगा। अगर वायर को क्या कर रहे हैं, वायर के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, दैट इज नीचे ऊपर, डायरेक्शन आप क्या हो रहा है, वायर चेंज कर रहा है, तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा? चेंज करेगा। तो वैसे करंट को हम लोग क्या कहेंगे? अल्टरनेट करंट कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है तो देखते हैं। पहला, इसका क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? चेंज करता है। इसका क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करता है। दूसरा, strength of AC is very high। इसका जो स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका जो ताकत होता है, स्ट्रेंथ is very low। इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है। थर्ड, travel long distance, it travel long distance without loss power। क्या बोले? इट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस इट्स देयर पावर, है ना। ये क्या करता है? एक लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है, ठीक है।
इट कैन ट्रेवल, ऐसे लिखते हैं, इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस देयर पावर, अपने बिना पावर को लॉस किए हुए, अपने स्ट्रेंथ को बिना गंवाए हुए ये लॉन्ग डिस्टेंस को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। देखते हैं ना, पावर हाउस से बिजली आता है घर तक, है ना, पावर हाउस से बिजली घर तक आता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन डीसी में क्या होता है, इट कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस without lost their power। ये अपने पावर को बिना लॉस किए हुए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकता। यानी अगर मान लो छोटा सा तार का यूज कर रहे हैं, मान लो बैटरी है, एक बैटरी ले लिए, ठीक है, एक बैटरी, छोटा सा बैटरी ले लिए और उसमें एक लंबा सा तार जोड़ दिए, तो क्या होगा, सारा का सारा एनर्जी जो होगा, सारा का सारा जो करंट होगा वो उस तार में ही क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, है ना। और लेकिन एसी में वो बात नहीं होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करता है, बिना स्ट्रेंथ को लॉस किए हुए ट्रेवल कर सकता है। लेकिन डीसी में क्या है, ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकता है बिना अपने पावर को लॉस किए हुए। अगर हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएंगे तो ये अपने पावर को क्या कर देगा, ये अपने स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, लूज कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज नॉट लॉस on increasing लेंथ को बढ़ाने पे, लेंथ को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका स्ट्रेंथ लूज नहीं होता, यानी कि स्ट्रेंथ एज इट इज रहता है। और इसमें क्या होता है, इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीज on increasing length of wire। यानी अगर तार के लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो ये अपने स्ट्रेंथ को लॉस नहीं करता है, कितना भी लंबा तार क्यों नहीं लगा देंगे, इसका स्ट्रेंथ एज इट इज रहेगा। लेकिन डीसी में क्या होता है, ये अपने स्ट्रेंथ को लॉस कर देता है, डिक्रीज कर जाता है इसका स्ट्रेंथ यहाँ, और इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर, वायर के लेंथ को बढ़ाने पे, ठीक है, समझ में आया। क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ध्यान देते हैं। A machine which is used for producing current और इलेक्ट्रिसिटी। वैसा मशीन जिसका यूज किया जाता है किस चीज में, करंट या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने के लिए, क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है, कॉल्ड जनरेटर, ठीक है। इट इज a device which convert mechanical energy into
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वैसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है, क्या कहलाता है, कॉल्ड जनरेटर। क्या कहलाता है वो, जनरेटर कहलाता है। ठीक है, ए स्मॉल जनरेटर is also called डायनेमो। जो स्मॉल जनरेटर होता है उसको और किस नाम से जानते हैं, डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट वर्क्स ऑन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये किसके वजह से काम करता है, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, उस पे आधारित ये काम करता है। दो तरह का जनरेटर होता है, टू टाइप्स ऑफ जनरेटर, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। ठीक है, दो तरह का जनरेटर होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ठीक है ना, तो क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिक जनरेटर की जरूरत है, समझ में आ गया ना। एक मशीन, वैसा मशीन जिसका यूज हम लोग करते हैं प्रोड्यूसिंग, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करता है। एक स्मॉल जनरेटर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डायनेमो भी कहते हैं, है ना। ये किस पे काम करता है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे ये वर्क करता है। दो तरह के जनरेटर के बारे में हम लोग करते हैं, एक एसी जनरेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। ठीक है, समझ में आया। प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, चलो ध्यान देना। इट इज based on electromagnetic induction. It works on the principle that when a straight conductor is moved in a magnetic field, then current induced in the conductor. In an electric generator, a rectangular coil is rotate rapidly in magnetic field between
magnet than the current induced। देखो क्या बोले, ये काम कैसे करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हम पढ़ाए थे, वायर को अप डाउन करना या कॉइल को मूव करना, इसी बेसिस पे ये क्या करता है, काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे ही ये भी क्या करता है, काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर को मूव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ मूव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट इंड्यूस करता है उस कंडक्टर में। एक्चुअली जनरेटर में होता क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिसको घुमाया जाता है, लगातार घुमाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। किसके पोल के बीच में? तो हॉर्सशू मैग्नेटिक फील्ड के पोल के बीच में इसको लगातार क्या कहता है, रोटेट किया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, करंट इंड्यूस करता है। ठीक इसका फिगर भी उसी तरह से बनता है जैसे कि हम लोग बनाते हैं किसका, मोटर का फिगर बनाए थे। यहाँ भी तुमको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेना है। ठीक है, दो तरह का यहाँ पे है। एक हो गया तुम्हारा कम्यूटेटर लगा, कार्बन ब्रश लगा, ठीक है, और इससे जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर, ना कि जुड़ेगा तुम्हारा कुछ और, गैल्वेनोमीटर। ये कॉइल है, इस कॉइल को क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, कॉइल को यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो क्या होगा, करंट इंड्यूस करेगा। अब जैसे क्या करें, इसको रोटेट करेंगे। जैसे मान लो कि अभी कॉइल को ऊपर के डायरेक्शन में रोटेट किया गया, जस्ट लाइक। अब इसको तुम ऐसे समझना, क्या समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है, और इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह से। यानी रोटेशन किधर है, ऊपर की ओर। फोर्स किधर लग रहा है, राइट हैंड रूल में, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट इंड्यूस किधर होगा, तो कॉइल में जो करंट का इंडक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन ये दिया गया है ना, रोटेशन ऑफ कॉइल अपवर्ड है। यहाँ पे कॉइल को क्या किया गया, ऊपर के डायरेक्शन में कॉइल को, ये देखो ये कॉइल हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल रखा हुआ है। अब ये घूम रहा है, इसको घुमाया गया, ऐसे रोटेट किया गया। तो रोटेशन के कारण क्या होगा, ये रोटेट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो थंब को रखेंगे अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट इंड्यूस्ड। यानी कि इस वायर में, इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड करेगा उसका डायरेक्शन किधर हुआ, मेरे तरफ, इस तरफ, यानी कि इसके डायरेक्शन में क्या हुआ, करंट का इंडक्शन हुआ, और ये करंट इस तरह से होता हुआ आएगा। ठीक है, इसी में ये हो गया तुम्हारा डीसी, कम्यूटेटर का यूज किया गया, दैट इज डीसी मोटर। इसी में क्या किया गया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिए, क्या कर लिए, रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिए, और इस कॉइल से एक स्प्लिट रिंग, दूसरा स्प्लिट रिंग को जोड़ दिया गया, और इस तरह से, है ना। तो पॉइंट बना, एसी, यहाँ पे ये है स्प्लिट रिंग। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो कॉइल यहाँ भी वैसे ही रोटेट करेगा, यहाँ भी कॉइल क्या होगा, रोटेट करेगा, और साथ में स्प्लिट रिंग जो देख रहे हैं ये क्या होगा, एज इट इज रहता है।
है ना। अब यहाँ पे ये कॉइल रोटेट करेगा, ये वाला पोर्शन और ये दोनों अब क्या होगा, एक साथ घूमता रहेगा। स्प्लिट रिंग भी यहाँ पे क्या होता है, रोटेट करता है साथ में, यानी कि एसी में, एसी जनरेटर में याद रखना कि पूरा का पूरा कॉइल, स्प्लिट रिंग वगैरह सब कुछ घूमता है। जो ना हर एक चीज, कार्बन ब्रश इवेंट सब कुछ क्या होता है, वो घूमता रहता है, हर चीज घूमता है। इसलिए डायरेक्शन क्या होता है, चेंज करता है। हाफ रोटेशन डाउन होने पे, जैसे ये आधा रोटेशन होता है ना, ऑटोमेटिक क्या करता है, जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाता है। हाफ रोटेशन पे ही डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाता है। ये जैसे ही हाफ रोटेट करता है ना, डायरेक्शन यहाँ पे करंट का बदल जाता है। ठीक है, जैसे ही हाफ रोटेशन पे ही ये डायरेक्शन चेंज करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कैसा करते हैं, कैसा मोटर जनरेटर कहते हैं, एसी जनरेटर कहते हैं। तो एक तरह हो गया डीसी और एक हो गया तुम्हारा एसी जनरेटर। Have you ever wondered how DC generator works and what are the basic parts of a DC generator? This video will give you the answers to these questions. We will start with the basic parts of the elementary DC generator. As you can see, the configuration of DC generator is pretty simple. The stator is a fixed part of the DC generator. The stator consists of permanent magnets, two of them north and south poles, which is placed to fit around the rotor. The main function of the stator is to provide the magnetic fields through which the rotor or armature coil is rotated. Armature loop are generally placed in slots of armature core. The armature coil is formed by connecting several loops in the series. Armature winding is formed by connecting several coils in series. The armature loop cuts the magnetic field, due to which an electromotive force, EMF, is induced in it. The split ring is a movable device used for reversing the polarity of the current. It's made of copper. The ring is divided through the middle into two parts. We must use the split ring to achieve single direction of current. The brushes are made of carbon. These are rectangular block-shaped. The only function of these carbon brushes of DC generator is to collect current from commutator segments. A galvanometer is an analog electromechanical actuator that produces a rotary deflection of some type of pointer in response to electric current. So how does the DC generator work? Firstly, we don't want that current direction to change. We want it to remain the same at all times. Let's say in this direction. So, how do we do that? Now, to make sure that the current direction remains the same, what we require is that these brushes constantly keep changing contacts between these wires for each half of rotation. So if the current flows in this way, in this position, this brush must be connected to this wire. So current flows like this and comes out. But when the coil rotates, you can see that when the coil comes to this position, the direction of the current changes. If we want to keep the current in the same direction, we must this brush to be in contact with this wire. Right. And then again, when the coil comes to this position, again the direction of the current changes, and again we want this brush to come in contact with this wire. Probably we already learned that. For every half rotation we must change contacts between brushes and wires. But how do we make this process happen automatically? We can automate this process by adding split rings. Split rings, as the name suggests, is a ring that is split in between, giving two half rings with the same gap in between. Now let's see how the split rings automatically change contact for every half a rotation. So right now this brush is in contact with this half part of the split ring, violet color. When the coil rotates and comes to this position, the direction of the current changes, and this brush now is in contact with the other half part of the split ring, pink color. This arrangement provides that current flows in the same direction. Again, as the coil comes to this position, finishing another half a rotation, you can see that this is only changed contact. Brush is in contact again with the violet color, half part of split ring. In this way, the DC generator is built, where the current only flows in one direction through any external circuit, and in this arrangement, with brushes and split rings, which helps us to automatically change contacts, we call them commutators. So split rings act like commutators.
The next thing we must mention, that it's really important for working principle of DC generator, is how can we determine the direction of the current, magnetic field and force. To determine all this, we must use Fleming's right-hand rule. So we will explain how can we use Fleming's right-hand rule. As you can see, the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil AB pushing that part of the coil upwards. So to know the direction of the induced current, we apply the Fleming's right-hand rule. How do we do that? We place our right hand so that the thumb points up, showing the direction of the force. The index finger or the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south pole, and the middle finger will point in the direction of the induced current, which is in our case from A to B. Similarly, to find the induced current in a part of the coil CD, we again use Fleming's right-hand rule. So the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil CD pushing that part of the coil downwards. The thumb points down, indicating the direction of the force, indexed finger or for the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south, and the middle finger will point in the direction of the induced current, which is in this case from C to D. So to conclude, the induced current follows the path ABCD of the coil. The effect of the split ring commutator in DC generators is to ensure that the induced EMF is always in one direction. We can see that in this graph, where V represents the amount of induced EMF and T represents time. You will notice in the graph how the sine wave changes with rotational speed of the coil. The coil in this case has clockwise rotation. Increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. The induced EMF has a positive sign. Also, you see the example how the sine wave changes with rotational speed of the coil, when the coil is rotating counterclockwise. Again, the increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. In this case, the induced EMF has a negative sign. To conclude, the DC generator has many advantages like the design is simple to operate, highly reliable, constant voltage can be achieved, speed control is easy. AC generator. An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy to electrical energy in the form of an alternating EMF or alternating current. Working principle of an AC generator. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, when there is a relative motion between a coil and a magnetic field, an electric current or EMF is induced in the coil. Parts of an AC generator. An AC generator has an armature ABCD. It is a rectangular coil with many turns wound around a soft iron core. A shaft. It can be rotated rapidly. A field magnet. It may be a strong permanent magnet with concave poles. Two slip rings S1 and S2. These are connected to the armature and thus rotate with it. Two brushes B1 and B2. They provide electrical contact with the slip rings and a load, which may be a galvanometer as shown. Working of an AC generator. When the armature rotates between the poles of the field magnet, the magnetic flux linked with the armature changes continuously. As a result, an EMF is induced in the armature. This in turn produces an electric current through the armature and the galvanometer and through the slip rings and the brushes. Note that the galvanometer needle swings between the negative and positive values. This means that an alternating current is flowing through the galvanometer. Direction of induced current. Initially, the armature ABCD is vertical with its arm AB up and CD down. The direction of magnetic field is from left to right. As the armature undergoes a half rotation clockwise, arm AB moves down
while arm CD moves up. According to Fleming's right-hand rule, the current will flow in the direction DCBA. So, the current will flow from B1 to B2 through the galvanometer. Now during the next half rotation, arm AB moves up while arm CD moves down. Again by Fleming's right-hand rule, current will flow in the direction ABCD, that is, from B2 to B1 through the galvanometer. Thus, the induced current changes its direction every half rotation. Graphical representation of induced EMF. Suppose the armature takes t seconds to complete one rotation clockwise. At time t is equal to 0 second, the armature ABCD is vertical with arm AB up and arm CD down. At this position, when the armature rotates, the rate of change of magnetic flux is momentarily zero. Hence, the induced EMF at this position is zero. During the first quarter rotation, the induced EMF increases. Then, at time t upon 4 seconds, the armature becomes horizontal. At this position, the rate of change of magnetic flux momentarily attains the maximum value. Therefore, the induced EMF at this position is maximum. During the second quarter rotation, the induced EMF decreases. Then, at time t upon 2, the armature again becomes vertical and therefore the induced EMF is zero. During the third quarter rotation, the induced EMF increases but has an opposite polarity as compared to that of the first half rotation. At time 3t upon 4 seconds, the induced EMF attains its maximum negative value. During the fourth quarter rotation, the induced EMF decreases and becomes zero momentarily at time t seconds, as the armature is vertical once again. So the magnitude of the induced EMF is sinusoidal. In this module you have learned an AC generator is an electric generator that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating EMF or alternating current. An AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. An AC generator consists of an armature, a shaft, a field magnet, slip rings and brushes. In India, the frequency of AC current is 50 Hz. It means that AC current change the direction 100 times in 1 second. देखो, तुम लोग को देखे होगे जनरेटर में दो तरह का जनरेटर हुआ, एसी डीसी, ये समझ में आ गया होगा। देखते होगे शादी ब्याह में जो जनरेटर चलता है तो लाइट अप डाउन करता है, बुक बाक नहीं, कम बेस ज्यादा कम होते रहता है। इस तरह से ब्लिंकिंग ऑफ लाइट होता है। क्यों? क्योंकि जनरेटर जब चलता है तो उसका रोटेशन उतना ज्यादा नहीं होता, जिसके कारण से क्या होता है हम बताए थे ना, क्या है बीच में, क्या है ये कम्यूटेटर होता है। तो कम्यूटेटर क्या करेगा, करंट के डायरेक्शन वहां पे क्या करता है, ब्रेक करता है। सप्लाई ऑफ करंट क्या कर देगा, रोकेगा। एक रोटेशन जैसे हुआ सप्लाई ऑफ करंट रुक जाएगा, और फिर जैसे ही दूसरा रोटेशन पे आएगा सप्लाई ऑफ करंट चालू हो जाएगा। तो इस सेंस में क्या होता है,
जैसे जनरेटर चल रहा है ना, वो अप डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट आ रहा था, अचानक से ब्रेक हुआ, डाउन हो गया, फिर अचानक से करंट आया, पुश खुल गया, यानी कि फिर अप डाउन इस तरह से होता है। जैसे ही कॉइल हाफ रोटेट करता है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, अचानक से दूसरा डायरेक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉइल थोड़ा स्लो मूव होता है, लेकिन अगर ये भी बहुत फास्ट मूव करेगा तो इसमें भी किसी भी प्रकार का तुमको लैग नहीं नजर आएगा, है ना, ज्यादा कम नहीं होगा। और जो एसी जनरेटर होता है, इसमें जो कॉइल होता है बहुत तेजी से नाचता है, बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है, और एक सेकंड में 100 टाइम्स, एक सेकंड में 100 बार उसका डायरेक्शन बदलता है, यानी 50 टाइम्स क्या होता है, वन डायरेक्शन, और 50 टाइम्स अपोजिट डायरेक्शन। जैसे क्या हुआ, आगे पीछे इस तरह से होते रहता है, यानी कि करंट गया, ठीक है, और दूसरे पल में ही क्या हुआ, डायरेक्शन करंट का बदला, अगला ही उसको क्या कर दिया, बूस्टर कर दिया, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन था वो हर सेकंड क्या हो रहा है, हर सेकंड के मैंने क्या बोले 1/100 सेकंड, टाइम पीरियड कितना है, 1/100 सेकंड का टाइम पीरियड होता है, यानी 100 बार क्या होता है, एक सेकंड में 100 बार रोटेट करता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 50 इधर 50 उधर, यानी 50 का क्या हुआ, वन डायरेक्शन, 50 का अनदर डायरेक्शन, यानी कि हमारे कंट्री में जो तुम्हारा जो सप्लाई लाइन आता है घर में, वो 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, और हमारा आई कितना डिडक्ट करता है, 1/16, हमारा जो आई लाइट का जो ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पता है ना हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, 1/16 सेकेंड, तो वहां कितना है, 1/50, 1/100 सेकेंड है, इसलिए आई इस चीज को डिडक्ट नहीं कर पाता है कि क्या करंट अप डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और जो नॉर्मल जो जनरेटर वगैरह जो शादी ब्याह में जो लगाते हैं, उसमें देखते हैं ब्लिंकिंग नजर आता है, क्योंकि उसका रोटेशन क्या होता है, कम होता है, आई इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो याद रखना, ये चीज एग्जाम में पूछता है कि भारत में जो सप्लाई लाइन है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज से या 50 to 60 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज करीब होता है, और रोटेशन कितना होता है, रोटेट करता है 100 टाइम्स इन वन डायरेक्शन, एक सेकंड में 100 बार वो घूमता है करीब। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, पहले फिगर, एक वायर आएगा, यहाँ पे लग गया फ्यूज, उसके बाद आगे बढ़ेगा, यहाँ लगेगा मेन फ्यूज, ये लगता है मीटर, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लगाते हैं that is main switch, या MCB यहीं लगाया जाता है, एक तार यहाँ से ऐसे निकला, उसके बाद फिर अगेन फ्यूज लगता है, कंज्यूमर फ्यूज, वायर गया एक डायरेक्ट, ये वायर गया, अब यहाँ से एक लाइव वायर निकलेगा, और एक सिंपल वायर आएगा,
लगा दिया गया इसमें बल्ब, विथ स्विच। फिर आगे गया वायर, एक ब्लैक वायर आया, ये वायर आया, ये लगा, ये हो गया तुम्हारा चलो देखो, हमारे घर में जो वायरिंग होता है वो होता है पैरेलल में। डोमेस्टिक वायरिंग किसमें होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, याद होगा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बताए थे। तो डोमेस्टिक वायरिंग किसमें होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा फिगर बनाए हैं। क्या होता है? और पोल पर से वायर आता है, दो तार आता है, पोल पर से दो तार आया, एक हो गया तुम्हारा लाइव वायर और दूसरा हो गया न्यूट्रल वायर। लाइव वायर जो होता है दैट इज हाई पोटेंशियल। ये क्या होता है? हाई पोटेंशियल। और ये क्या होता है? लो पोटेंशियल। ठीक है, क्या है? हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वायर होता है। घर में जो ट्रांसफार्मर में से जो तुम्हारा तार आता है, दो तार आता है, एक लाइव वायर, लाइव वायर यानी पॉजिटिव, लाइव वायर मतलब यहाँ पे क्या है? प्लस, और न्यूट्रल वायर क्या है मेरा? माइनस। आया, लगाया जाता है एक फ्यूज। ये क्या है मेरा? फ्यूज है, ताकि किसी प्रकार का अगर लाइन काटने वगैरह की बात है तो ये फ्यूज का ही काम होता है। इस फ्यूज को निकाल लेंगे, पूरा घर का सप्लाई क्या हो गया? बंद हो गया, पूरा लाइन ही बंद हो गया। ठीक है, फ्यूज के आगे बढ़ते हैं। लगता है मीटर। ये मीटर क्या करता है? ये मीटर डिटेक्ट करता है, किस चीज को डिटेक्ट करता है? यूनिट ऑफ करंट यूज। कितना तुम करंट क्या किए? यूज किए हो। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? घर में मीटर लगता है, कितना करंट लगा, मीटर उठा, कितना तुमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, इसके लिए लगाया जाता है मीटर। मीटर के आगे जैसे ही बढ़ता है आता है मेन स्विच। देखते होगे मेन बोर्ड लगाया जाता है, घर का लाइन काटना है, मेन स्विच गिरा दिए, घर का लाइन कट गया। मीटर में लाइन रहता ही है, लेकिन इधर का लाइन क्या हो गया? सप्लाई बंद हो गया। अब अपना जो काम वगैरह है वो सारा काम हम लोग कर लेंगे। यहीं से तुम्हारा 3 वायर निकलता है। यहाँ से 2 वायर आया था, यहाँ से 3 वायर हो गया। एक हो गया तुम्हारा लाइव वायर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होता है? तो अर्थ वायर होता है कि अगर मान लो किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, तो करंट का सप्लाई हमारे, जैसे मान लो कि कहीं पे तार कटा हुआ है, 3 प्लग का में जिसका यूज होता है, 3 प्लग वाले में 2 तो प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, ऊपर वाला जो होता है ये अर्थ वायर होता है। इसका काम होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके धरती तक क्या कर देना? समा देना। यानी कि ये जो तुम्हारा आया है, ये जो आया है, ये कहाँ जाके मिलता है? ये अर्थ में होता जाकर के मिला हुआ। ठीक है, ये जाके के कहाँ होता है? अर्थ में, ताकि जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो चला जाए डायरेक्ट कहाँ? अर्थ के अंदर समा जाए। इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये है तुम्हारा अर्थ वायर। 3 वायर होता है, एक हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, और तीसरा हो गया अर्थ वायर। अर्थ वायर का यही काम है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचाने के लिए यूज किया जाता है इस चीज का। ठीक है,
अब जैसे ही मेन स्विच से करंट आगे बढ़ेगा, एक कंज्यूमर फ्यूज हो गया। कंज्यूमर फ्यूज मान लो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट जैसे होगा फ्यूज उड़ जाएगा, सप्लाई बंद, है ना। यहीं पे कभी कभी एमसीबी का भी यहाँ यूज किया जाता है, फ्यूज या एमसीबी यहीं पे भी यहाँ भी लगाया जाता है। क्या लगा दिए, एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये होता है तुम्हारा एमसीबी। और याद रखना ये काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। एमसीबी किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। और फ्यूज जो होता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट का सप्लाई बढ़ गया, फ्यूज गर्म हो गया, मेल्ट कर गया। एमसीबी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एमसीबी या कंज्यूमर फ्यूज का यूज किया जाता है, ताकि अगर मान लो किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ तो उससे बचा जा सके। अब क्या हुआ, तीन तरह तार हो गया, तो एक प्लस से लेंगे, एक माइनस से लेंगे, स्विच लगाए, बल्ब को लगा दिए, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, पैरेलल में है। अगला जैसे देखो यहाँ पे 3 पिन प्लग होल्डर जो देखते हैं 3 वाला, उसमें क्या होगा, एक प्लस आया, एक माइनस आया और एक क्या ले लिए, ये हो गया तुम्हारा अर्थ वायर। अर्थ वायर क्यों हुआ, जैसे सपोज करो इसमें आयरन लगाए, आयरन का 3 प्लग होता है, आयरन लगा दिए। आयरन में क्या हुआ, कहीं पे तार कटा हुआ और वो तार कट करके आयरन में सट रहा था, तो क्या होगा, जैसे ही आयरन हम छुएंगे, अगर मान लो ये वायर ना हो, जैसे ही हम लोग आयरन छुएंगे तो उसमें जो करंट था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारे बॉडी से होते हुए धरती तक चला जाएगा, तो हमको क्या लगेगा, बिजली का झटका लगेगा, करंट लगेगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है अर्थ वायर। क्यों कि यहाँ पे ये कंडक्टर है और मेरा शरीर बैड कंडक्टर है, मेरा शरीर क्या है, उतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं है, बस कंडक्टर है। और यहाँ पे क्या लगाया गया है, गुड कंडक्टर लगाया गया है। तो करंट को पता है, करंट को फ्लो करने के लिए जहाँ अच्छा कन्वेंशन मिलेगा, जहाँ अच्छा साधन मिलेगा, उधर से करंट फ्लो कर जाएगा। तो क्या होगा कि मेरे बॉडी से फ्लो ना करके इधर से ये क्या हो गया, करंट वापस चला गया। क्या हो गया, मेरे बॉडी से करंट ना जा करके इसी वायर से होता हुआ कहाँ चला गया, धरती में जाके समा गया। तो हम इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इसी के लिए यूज किया जाता है, इसमें एक वायर यूज जाता है, अर्थ वायर। बताओ समझ में आया। 3 अलग अलग कलर का तार यूज होता है, रेड, येलो या ब्लैक और ग्रीन। 3 तरह के वायर का यूज किया जाता है। रेड जो दिया जाता है दैट इज लाइव वायर के लिए यूज होता है ना, पॉजिटिव के लिए खतरा का निशान, यानी कि वो क्या है, खतरा है। लाइव वायर रेड वायर से होता है। न्यूट्रल वायर येलो या ब्लैक तुमको दिखेगा, न्यूट्रल यानी कि दैट इज नेगेटिव। न्यूट्रल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, येलो या ब्लैक। वायर का ये कलर है, कलर, और ये इसका यूज है। तो लाल वाले तार में हमेशा हम लोग क्या जोड़ते हैं, लाइव वायर का जोड़ते हैं, प्लस वाले को जोड़ते हैं, पॉजिटिव। न्यूट्रल वायर में हम लोग येलो या ब्लैक वाले तार में हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला को जोड़ते हैं। और ग्रीन कलर का जो वायर होता है दैट इज अर्थ वायर, यानी सेफ्टी के लिए इसका यूज करता है। हरा झंडा तक किया ग्रीन, है ना, तो सेफ्टी के लिए इसका यूज होता है अर्थ वायर में। तो 3 तरह के तार का भी यूज किया जाता है हमारे वायरिंग में। बहुत येलो, ब्लैक, ब्लू भी वायर होता है, तो इसका भी यूज यही होता है। रेड सिंपली रेड आएगा पॉजिटिव, येलो ब्लैक हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन के लिए अर्थ वायर में ग्रीन तार का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। डोमेस्टिक वायरिंग इस तरह से होता है। कैसा होगा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। हर एक के लिए अपना अपना स्विच होता है, हर एक के लिए अपना अपना एक
फ्यूज होता है। देखते हैं टीवी में अलग फ्यूज होता है, फ्रिज में अलग फ्यूज होता है, वॉशिंग मशीन में अलग फ्यूज होता है। तो डिफरेंट डिवाइसेस हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई डिफरेंट डिवाइसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज। तो जैसा कि पता है डिफरेंट डिवाइसेस नीड्स डिफरेंट पावर ऑफ एनर्जी। हर एक अलग अलग डिवाइस को पावर ऑफ एनर्जी क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए, है ना। इफ वी यूज सेम टाइप ऑफ फ्यूज इन ऑल डिवाइसेस, सारे के सारे डिवाइसेस में एक ही तरह का फ्यूज अगर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, द डिवाइस व्हिच नीड्स मोर एनर्जी, जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, डू नॉट वर्क ऑन लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज। मान लो अगर कोई कम मेल्टिंग पॉइंट वाला फ्यूज अगर हम यूज कर लें, जिसका क्या है एम्पियर कम है और उसको ज्यादा करंट का जरूरत है, तो वो फ्यूज क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो जिसको ज्यादा पावर का जरूरत है वहां पे फ्यूज का भी जो होगा यूज वो भी ज्यादा पावर का होगा। जिसको कम पावर का चाहिए और वहां ज्यादा पावर का यूज कर दिए, तो बिजली के बढ़ने पे करंट मेल्ट किया ही नहीं, वो डिवाइस खराब हो जाएगा। That's why we use different types of fuse in different places. अलग-अलग जगहों पे their needs के अनुसार हम लोग अलग-अलग फ्यूज का यूज करते हैं। Is it clear or not? समझ में आया? ठीक है, ये डोमेस्टिक वायरिंग समझ में आया। MCB और फ्यूज। MCB कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फुल फॉर्म। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। जैसे मान लो MCB लगा हुआ है, MCB हमको मदद करता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा MCB डाउन हो जाएगा, है ना। जैसे ओवरलोड होगा MCB डाउन हो जाएगा, कहीं पे शॉर्ट लगा हुआ है MCB डाउन रहेगा। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। होता क्या है, उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है MCB में। जब तक करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो मान लो क्वाइल होगा, एक छोटा सा क्वाइल होता है ना। तो करंट जब फ्लो कर रहा है तो वो नॉर्मली करंट क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट कहते किसको है, तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाए, प्लस और नेगेटिव दोनों को आपस में जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे ही दोनों तार सट गया तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करना पर तेजी से होने लगेगा, यानी कि करंट का फ्लो क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो कॉइल बनाया गया था MCB के अंदर, उससे करंट का सप्लाई क्या हो गया, अचानक से बढ़ गया। तो बढ़ने के कारण उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर्म किया। जैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर्म करेगा तो उसके सामने में ही एक छोटा सा लगा हुआ होता है, लोहा का यानी आयरन का कुछ मटेरियल लगा हुआ होता है, उसको अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। जैसे उसको अपनी ओर खींचेगा, सर्किट ब्रेक कर गया, लाइन का सप्लाई बंद हो गया। ऐसे काम करता है कौन, MCB। क्या समझे, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल प्लस माइनस आपस में सट गया, तो सटने के कारण फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो फ्लो ऑफ करंट के बढ़ने के कारण जो तुम्हारा MCB में जो कॉइल लगाया गया था, वो कॉइल क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें बढ़ जाएगा, उसका पावर अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। एक नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा था तो उसका पावर क्या बताए थे, करंट के फ्लो अगर बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी उसका क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कोई पावरफुल मैग्नेट बन गया, उसके सामने में एक कॉइल छोटा सा कुछ आयरन का सब्सटेंस रखा होता है, उसको अपनी ओर खींच लेगा, जिससे सर्किट क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो सर्किट ब्रेक कर गया, करंट का सप्लाई बंद हो गया। फिर से MCB को जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, MCB उठा दिए, यानी कि वो जो प्लेट था जो उसमें सटा हुआ था वो अपने पोजीशन पे चला गया। जैसे ही वो अपने पोजीशन पे चला गया, फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये काम करता है MCB, ठीक है। और जैसे तुम लोग फ्यूज जो होता है ये बना होता है, याद रखना, टीन प्लस SN, टीन हो गया और लेड, इन दोनों का मिक्सचर होता है। लेड और टीन का मिक्सचर होता है 50% प्लस 50% दोनों। इसको हम लोग कहते हैं सोल्डर। हम लोग सोल्डिंग मशीन में नहीं, वो जब कोई चीज चिपकाने वगैरह का यूज करते हैं, नहीं, सोल्डिंग मशीन गरम कर लेते हैं और वो तार को गला करके जो चिपकाते वगैरह है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह को, तार वगैरह को जो चिपकाने का यूज किया जाता है, वही सोल्डर होता है। 50% लेड होता है और टीन दोनों का मिक्सचर होता है।
बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। कैसे? जैसे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल वायर क्या हो गया? जुड़ गया, करंट का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो करंट का सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा? तार गर्म हो जाएगा, और तार जैसे ही गर्म होगा ये फ्यूज क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। जैसे मेल्ट कर गया, करंट का सप्लाई बंद हो गया, कनेक्शन शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया। ओवरलोड, ओवरलोड में भी क्या होता है? एक ही जगह पे बहुत चीज जोड़ दिए। एक स्विच था, होल्डर था, उसी में लैपटॉप का भी चार्जर जुड़ा हुआ है, उसी में फ्रिज भी जुड़ा हुआ है, उसी में आयरन भी जोड़ दिए। तो क्या होगा? एक ही जगह पे बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज होने लगेगा, तो करंट का सप्लाई वहां पे बढ़ जाएगा। तो करंट का सप्लाई बढ़ेगा तो क्या दिखाएगा? हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा। हीट होगा, ज्यादा हीट होगा, और हीट जैसे ही होगा तो वो क्या करेगा? ये फ्यूज पिघल जाएगा, गल जाएगा, और सर्किट ब्रेक कर जाएगा, है ना? तो इस तरह से काम करता है एमसीबी और फ्यूज। बोलो, समझ में आया? Domestic electric circuits. The supply from which we receive the current for our houses is called as mains. The mains are connected to the power meter from which they are connected to the wires of the house. The types of wires involved in the current supply are as follows. One of the wires is called as positive or live. This is usually insulated in red. The other one is called as neutral or negative. This is usually insulated in black. The electrical appliances with metallic or high conducting exteriors accumulate static charge over time when they are switched on. If a neutral body comes in contact with the exterior of such objects, they lose their charge. So, if we touch such object, we might get electrocuted. To avoid this, a third wire called as ground is taken from the object and the other end is connected to a large object like Earth. The Earth being so large can absorb large quantities of charge, thus making exterior of object neutral and safer. If we connect the supply to the appliances in series, there will be potential drop across each of them, and after few connections, there may not be enough potential for other appliances. To avoid this, the electrical appliances are connected to the connections from the mains in parallel. This ensures that all of them receive the same voltage of current. One of the measures done to improvise the safety of the circuits is the usage of fuse. The fuse is a thin conducting wire usually enclosed in porcelain. The fuse is connected between the mains and the electrical components. If a very high power current tries to pass through the fuse wire gets heated and eventually melts and breaks itself, thereby breaking the passage of the high power to the electrical appliances which would otherwise get damaged. Electricity is generated at the powerhouse station. It brings to our house by two thick wire fixed over tall electric pole. One of these wires high potential 220, whereas another wire has low potential 0 वोल्ट। एक हाई पोटेंशियल वायर है 220 वोल्ट का, और दूसरा जो होता है अनदर वायर, वो जो होता है तुम्हारा
लो पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट का। whereas neutral wire has black or yellow insulated covering। ठीक है, two insulated wire L and N, that is live wire and neutral wire, coming from pole enter a box fitting just inside our house, just inside our house. In this box, a main fuse F is put in the live wire having very high rating, about 50 ampere. Then both wire L and N enter in meter, which records the electric energy consumed by us. After that, these wire enter in main switch, which is used to on or off the supply line of electric current in domestic वायरिंग में जो सप्लाई लाइन जा रहा है उसका लाइन काटने या चालू करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मेन स्विच का यूज करते हैं। In our house, different devices are
used which needs different power supply. So we use different power of fuse used in वायरिंग। हम लोग घर में अपने घरों में डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं जिसको डिफरेंट टाइप्स का पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए फ्यूज भी कैसा लगता है, अलग अलग ढंग का फ्यूज लगाया जाता है। ऑल द डिवाइसेस इन आवर होम आर connected in parallel combination। हमारे घरों में जो भी डिवाइसेस लगाया जाता है सब का सब कैसे लगाया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। एक थर्ड वायर that is earth wire is also used in wiring, which is directly connected to अर्थ। जो तीसरा वायर होता है अर्थ वायर, इसका भी यूज हम लोग करते हैं वायरिंग में, जो कि क्या होता है, डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट होता है, अर्थ में कनेक्ट होता है। इसका क्या काम है, द एडवांटेज ऑफ अर्थ wire is that whenever device get directly connected to live wire, then the extra electron which comes in our device will be transferred those electron directly to the earth and protect from electric shock. Electric fuse. It is a device which have very low melting point, made up of lead and tin, connected in live wire.
live wire just before devices to protect our device devices from short circuit or overloading. फ्यूज का यूज क्या क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग वगैरह होने पे अपने डिवाइस को बचाने के लिए इसका यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं. इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके it works on heating effect of electric current. ये heating effect of electric current पे क्या करता है? काम करता है. We have been looking at some of the advantages of the fact that electric current heats up objects through which it flows. Electric water heaters, light bulbs, and electric iron are few of the electrical appliances that make use of this fact. However, it has its drawbacks too. For instance, if these appliances are overheated, then they may get damaged or even catch fire. In fact, not only these appliances, every appliance in our house is affected by the unwanted high electric currents. There is a limit to the amount of electric current that any device can withstand. If the current exceeds that limit, the components of the device heat up and this may even lead to fire. So, is there any way to prevent that from happening? There is a device which is used to prevent this and it's called electric fuse. Well, it comes in many shapes and sizes. This is what it generally looks like. It has a fuse wire and is connected to the two terminals which are made up of some metal. This wire is made up of zinc, copper, silver or aluminium. The rest of the switch is basically made up of a non-combustible material. And it makes perfect sense too. We should make sure that the device which is used to prevent fires in other devices must not catch fire. Now, how does it prevent household electrical appliances from catching fire? Well, this fuse is introduced in every circuit in our household. This is how the basic circuit would look like. We have seen the simplified circuit in our previous videos. Okay, so when the current flows through the circuit, it heats up the fuse wire. And when there is a heavy current in the circuit, the wire simply melts, resulting in the broken circuit. Yes, the circuit breaks and the current does not reach the appliance. So this is how an electric fuse functions. Simple, isn't it? Now there is one obvious disadvantage of electric fuse that you must have noticed. Once the fuse wire melts, it cannot reform itself. We have to replace the fuse with a new one manually. To overcome this problem, automatic fuses are used nowadays. They are also called miniature circuit breakers, often abbreviated as MCB. They work like automatic switches. Whenever there's an excess amount of current flow in the circuit, they automatically switch off. This breaks the circuit and the appliances are saved from excessive current. They also automatically get switched on when the flow is back to normal. Next है short circuit. नेक्स्ट है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट। क्या होता है शॉर्ट सर्किट? व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर directly
directly get in contact, ठीक है, क्या बोले, when live wire and neutral wire directly get in contact, supply of current, then supply of current become very high, then supply of current very high, known as short circuit. शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली गेट इन कांटेक्ट, देन सप्लाई ऑफ करंट बिकम वेरी हाई, नोन एज शॉर्ट सर्किट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर decrease and flow of electric current become easily, due to which very high temperature produce and catch fire। देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा, तो सप्लाई ऑफ करंट बहुत ज्यादा होने लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वायर का रेसिस्टेंस याद रखना घट जाता है, क्यों, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया, इजीली हो गया है ना, तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर घट जाता है, इसलिए फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इजीली हो जाता है, आसानी से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जिसके कारण से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो बढ़ने के कारण क्या देता है, हीटिंग इफेक्ट देता है, बहुत ज्यादा तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और आग लग जाएगा। तो बोलते हैं ना कि आग लग गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, दैट इज शॉर्ट सर्किट के कारण क्यों आग लगता है, इसके पीछे का वजह क्या है, समझ में आ गया। और लास्ट है तुम्हारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, उसको समझते हैं। ओवरलोडिंग, when two or more than two devices are used in a single socket। एक ही सॉकेट में दो या दो से अधिक डिवाइस क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। When two or more than two devices are used in a single socket, then supply of current in that socket become very high, due to which they get overheated, called overloading। यानी जितना का कैपेसिटी है, एक गाड़ी में 50 आदमी का कैपेसिटी है, अब बैठा लेते हैं 100 आदमी, तो क्या है वो कहलाता है ओवरलोडिंग। नहीं, कैपेसिटी 100 आदमी का है, बैठा लिए 150 आदमी, दैट इज व्हाट, ओवरलोडिंग।
वैसे ही बोल रहा है एक सॉकेट में एक डिवाइस यूज करना है, लेकिन एक से ज्यादा डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा डिवाइस अगर हम यूज करने लगे एक ही सॉकेट में, तो वहां पे करंट का सप्लाई क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? कहीं पे दिक्कत है तो बोलो। और चैप्टर में इतना ही। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।